Good morning students, myself Deepali Harchande. Today we are going to start with the second part of 1.4 lesson, that is Big Data, Big Insights. In the first part we have seen the meaning of what does it mean by data, then what does it mean by insights. That two concepts we have learnt. If you want to learn more, just go through the first video, so you will get it more, you will get it better than what we have seen. First page, what is a big data, then we have learnt about uses of data. In that we have covered 4 points. Very first point was location tracking. How do we track the location and other things that we have learnt. In the second point we have learned about understanding the weather patterns. Then third point we have learned, which is healthcare industries. We people are consumers and we are using all these healthcare apps also. That information we have studied in the last lecture. Now we'll start with the fourth point, banking, finance and trading. See, what we have seen till yet, that whatever information we are collecting or whatever information is automatically collected by various apps, it has been monitored by the system of computer, and that information, that data is been utilized by various companies, then various industries for various purposes. So same here, new point is banking, finance and trading. How the data is useful for banking, finance and trading, that we are going to see in this lecture. Let's see the first para. With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. As we know, the various sectors, they are using this analytic data. Analytic means after analysis they have got a particular preferences of customer. So with the help of that preferences, the companies, industries, even banks, they start providing their services. So here how the bank, they, what kind of service they could provide or they can provide after the analysis of this data. Yes, here let's take one example of for example, there are various plans of LIC. Mutual fund is there, then pension policy is there. Means various banks, they are providing such kind of services. They are providing the plans for our future. So with the help of advertising, with the help of analysis, they came to know about which plan or the preference of the customers towards which plan. So as per their preferences, as per the interest of customers, the bank sector as well as the private and the government, both the sectors, they are providing the service to the consumers. Consumers means we people, customers or consumers. So with our preference, they provide us a suitable plan. That has been mentioned in this paragraph. With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans, as we have seen the example.
For example, if the 98%, sorry, not 98, but at least 70 to 75% people, if they would prefer the mutual plan, or if they would prefer the pension policy plan, so accordingly the companies or the banks, they provide suitable plans to the customer. So big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. So it is suitable for them also, it is beneficial for the that type of agencies. Agencies means banks and other private sectors. So that is the useful, or this is the useful information of data to the various agencies. Now next paragraph. Banking and finance sector is using big data to predict the prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of archival of audit trails, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts. Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failure in net banking. Let's see this point. By using monitored data, the bank sectors and finance sectors, they could predict and prevent cyber crimes. Then card fraud detection means if there is any fraud in the bank, or if there is a fraud in cards, so that can be detected by this analytic data. Then archival of audit trails. Audit trails means an audit trail is a step-by-step record by which accounting or trade data can be traced to its source. Audit trails are used to verify and track many types of transactions, including accounting transactions and trades in brokerage accounts. Now, what does it mean by audit trail in different manner? It is also called as an audit log. Is a security relevant chronological record, set of records and or destination and source of records that provide documentary evidences of the sequence of activities that have affected at any time a specific operation, procedure or event. That is the meaning of audit trail. Let's come back to our content. Now we'll start with the next para. Banking and finance sector is using big data to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit trails, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts. Now let's see what has been mentioned here. Now with the help of this information, with the help of the analytic or monitored information, what the bank sectors are doing. Now what they do, they could predict and they could prevent cyber crimes. Then card fraud detection. Card fraud detection means if there is any fraud
in cards. So that also detecting by the banks. Then archival of audit trails. This is a new word, archival of audit trails. Let's see the meaning of it. Let's see what does it mean by audit trail. An audit trail is a step-by-step record by which accounting or trade data can be traced to its source. Audit trails are used to verify and track many types of transactions, including accounting transactions and trades in brokerage accounts. So in that audit trail, we can say in simple way, in simple language, that we can verify and track many transactions. Means whatever transactions we are doing, it can be traced by this audit trails. The different meaning of audit trail. An audit trail is also called as audit log, is a security relevant chronological record, set of records and or destination and source of records that provide documentary evidence of the sequence of activities that have affected at any time a specific operation, procedure or event. So let's move towards our content. इसमें ऐसा दिया है कि बैंक सेक्टर जो है वो जो सारा डाटा एनालाइज होके आता है और जो प्रेफरेंसेस जो लोग उसमें भरते हैं, जैसे कि हमने देखा इन वेरियस ऐप्स वी हैव एडवर्टीजमेंट, अलग अलग ऐप्स पे अगर हम जाते हैं एंड अगर हम वो ऐप्स इस्तेमाल करते तो उसमें अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट आती है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर यूजिंग द डिक्शनरी ऐप, so in that dictionary also you will get more and more advertisement, and various advertisement you can see, you can watch on this dictionary also. So whatever information we are feeding in that advertisement or whatever forms we people have are filling, so this information, this data goes to the computer, and computer or the system, they started analyzing that information, they started monitoring that information. So that point we have already learned. So after analyzing, after monitoring, the banks and the finance sectors, they are collecting all that data, and after collection of that data, they are using that data for their smooth running or for the smooth administration system of the bank sectors. अभी वो क्या करते हैं, जो जो कुछ कलेक्ट किया हुआ डाटा है उसमें से क्या करते हैं, वो एनालाइजिंग के बाद, मतलब उसका विश्लेषण करने के बाद वो क्या उनको क्या समझ में आता है कि कुछ क्राइम होने वाला है क्या, साइबर अटैक होने वाला है क्या, साइबर क्राइम होने वाला है क्या. अगर होने वाला है तो हम हमारा जो सारा सिस्टम हो वो प्रोटेक्ट कैसे करें, ये उसमें से समझ में आता है. आर्काइवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स में मतलब ऑडिट्स रहते हैं, ऑडिट्स लिया जाता है, उसमें अगर प्रेडिक्ट किया जाता है, प्रेडिक्ट मतलब अगर कुछ होने वाला है, कुछ दुर्घटना आगे जाके फ्यूचर में होने वाली है, क्राइम अटैक होने वाला है और कुछ भी ऐसा जो हानि पहुंचा सकता है बैंक को, बैंक के सिस्टम को, कंप्यूटर के सिस्टम को अगर हैक हो गया तो क्या. तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये डाटा में से मिलता है, और ये जो लोग हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करके फिर हमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ब्रूट फोर्स अटैक्स मीन्स अ साइबर अटैक दैट रिलाइज on guessing all possible combinations of a targeted password until the right one is found. अब ये क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक्स मीन्स अगेन द साइबर अटैक. अगर साइबर अटैक होने वाला है तो वो गैस करते हैं और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, अगर होगा तो उसमें क्या हानि होगी. तो ये सब स्टडी ये बैंक सेक्टर्स के लोग करते हैं. banks can predict future attempts also, मतलब in future what would happen
with the system of banks, that also they come to know with the help of this data. Now next is big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking. मतलब ये जो अगर हम देखेंगे, सिर्फ हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सिर्फ हम प्रेडिक्ट नहीं करते, मतलब फ्यूचर में ऐसे साइबर अटैक हो सकता है, सिर्फ हम उतना ही क्या बोलते हैं उसको, काम नहीं करते, उतने तक ही सीमित नहीं रहते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, वो डाटा हैंडलिंग इश्यूज जो है वो भी हम ये यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मिस ट्रांजैक्शंस, like miss transaction means wrong transaction. Sometimes you also have face this problem, miss transactions or the wrong transaction. Actually transaction means what? An exchange or transfer of funds. If I want to pay a bill with the help of credit card, so that is also known as the transaction. Transaction means to pay bills with various sources. So if there is a mistransaction, if there is a failure of transaction, if there is a wrong transaction, so on that transactions also we can work. We means the banks, they are working on the transactions also. And if there is a failure in net banking, that time also the data is useful. So why that net banking has got failed, so we means the banks, they start thinking about the causes and consequences of the failure of net banking. So this is the procedure actually where the banks are working. It can even predict possible spikes on servers so that banks can manage transactions accordingly. If there are any problem with servers, so that time also banks are ready to take proper measures, or they are ready to take the prior precautions also. So it is all about the banking, finance and trading. Now next paragraph. The Securities Exchange Commission is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. The SCE means the Securities Exchange Commission, is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets. द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, ये एक कमीशन है जो किस पे काम करती है, अगर मार्केट में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है और इफ़ देर आर एनी इलीगल ट्रेड्स और सस्पिशियस एक्टिविटीज़, सो ये जो फ्रॉड है, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, इलीगल ट्रेड्स है, इस पे नज़र रखने का काम किसका रहता है, द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन। ये एक्सचेंज कमीशन का ये काम रहता है और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो जो नेटवर्क बाद में वो इन्फॉर्मेशन का वो एनालिसिस करते हैं, इट कम्स अंडर द नेटवर्क एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स टू आइडेंटिफाई possible frauds in financial market. If there would be any frauds in financial market, if there would be any fraud in share market, so this is the responsibility given to the Securities Exchange Commission by the Government of India, and they are working for that sector. They are working to find out, to predict the possible illegal trades and possible suspicious activities also. इसमें क्या दिया है, एक ये जो कमीशन है सिक्योरिटी मतलब क्या, टू प्रोटेक्ट, सिक्योरिटी देना है, किसको सिक्योरिटी देना है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, शेयर मार्केट है, और जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया हम बोलते हैं इकोनॉमी है, तो उसमें अगर कुछ इलीगल ट्रेड्स हुआ होगा, अगर कुछ ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी मीन्स विच इज़ नॉट
good for that financial market. सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज को हम मराठी में संशयास्पद कृती असं म्हणतो. तर अशा काही संशयास्पद कृती असतील तर याचाही विचार केला जातो, यालाही प्रोटेक्शन दिलं जातं ते सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनतर्फे. सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं कुछ आशंकित ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ है कि एक्टिविटीज़ जो बराबर नहीं है, जो मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसे जो कुछ एक्टिविटी है उसको ढूंढकर वो रूट से ही हमें उसको नष्ट करना है. ये जो काम है वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन करते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग which is HTF is an area. High frequency trading HFT is an area where big data finds a lot of use today. Here big data algorithms are used to make trading decisions. Today the majority of equity trading now takes place via data algorithm that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds. This paragraph tells us about the online trading as well as online buy, sell and decisions. In 21st century, we are preferring online or net banking than online shopping, and that data has been monitored by the system, and big data algorithms are used to make trading decisions. Algorithms means, in a simple way, calculations. There is a huge calculations about the preferences of people, and that calculations, that data is useful for trading decisions. For example, right now or in this COVID-19 situation, we have banned the Chinese products, but you will see that if the sale is there, Chinese product sale is there, online sale, so within a 1 or 2 minutes, lakhs of people, they are buying the products. For example, mobiles, they are buying the mobiles within 1 or 2 minutes. So this is the split seconds, means in that split second, within 2 or 3 seconds, through the websites, people buy, sell and take decisions to purchase the goods. Fine. So this is known as within a split seconds we people purchase the goods, and due to the big data algorithms, the companies or trading companies, multinational companies, they come to know about the requirement of people. इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि अल्गोरिदम है, जो कुछ डाटा है वो अल्गोरिदम मतलब कैलकुलेशन उसका हो जाता है, उसका मॉनिटरिंग होता है, और उसके बाद कंपनीज़ को पता चलता है कि कंट्री में, कौन से भी कंट्री में और कंट्री वाइज क्या क्या उनको चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो ये अल्गोरिदम डाटा से देखते हैं कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़, एमएनसीज़, और वो क्या करते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं. स्प्लिट सेकेंड्स में बाय सेल होता है, मतलब कभी कभी ऑनलाइन ये लगते हैं, सेल्स लगते हैं, तो वो जो ऑनलाइन सेल है उसमें लोग विदिन अ मिनट, विदिन 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, दे स्टार्ट ऑर्डरिंग वेरियस गुड्स. सो दिस वो क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं विदिन जो मिनट्स दिए हैं उसमें, और वो परचेस करते. तो ये फ़ायदा किसको होता है, ये बिग डाटा का फ़ायदा जो कंपनीज़ है उनको होता है. लेट्स स्टार्ट विद द 5th पॉइंट. व्हेन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन so many permutations and combinations
of statistical analysis. A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions, and workouts. Let's see what has been mentioned here. See, whenever we are watching TV or whenever we are watching cricket match, so that time continuously they are flashing a scoreboard of players. Here two words are there, permutations and combinations. So what does it mean by permutations and combination? Permutation means the ways a set of objects can be ordered. That is mean by permutation. See, whenever we are watching cricket match, that time they are flashing out, they are screening or they are streaming continuously the achievement of players, the scoreboard of player, how many half centuries and centuries has been done by a particular players. So all this information continuously flashing on our screen. So that is known as permutations and combinations of statistical analysis. So automatically the system is there, they are recording the whole cricket match, and automatically the computer is analyzing that data. It's not a manual system or manual records, it's a computerized system, and automatically the computer is monitoring that data, and we got the statistical analysis of a particular player. हिंदी में थोड़ा देखेंगे, जब हम क्रिकेट की मैच देखते तब हमें हमेशा वो बीच बीच में जब क्रिकेट मैच का स्कोर ख़त्म हुआ है और ओवर ख़त्म हुए तो उसके बाद क्या दिखाते हैं, फ्लैश करते, कंटिन्यूसली दे आर फ्लैशिंग मीन्स स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, देन कौन से प्लेयर ने कितना रन निकाला है, हाफ सेंचुरी है या सेंचुरी है, और उसका रैंक कितना है सारे प्लेयर्स में, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार हमें दिखाते रहते. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है. मतलब अगर लाइव मैच है तो लाइव मैच का भी रिकॉर्डिंग होता है, और वो मैनुअल और ऑटोमेटिक मैनुअल उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है. कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम है, तो वो जब रन बनाते तो वो ऑटोमेटिकली दैट रन गोज़ टू दैट रिकॉर्ड. मतलब रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड में वो रन्स, देन कितने उन्होंने आउट निकाले हैं, सब इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड होके एनालिसिस होके हम तक हमारे पास आती है. तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. gigantic data has been credited over a period of time from the recording of matches. जैसा मैंने अभी बोला कि सब रिकॉर्डिंग होता है, तो टाइम ऑफ पीरियड जैसे टाइम पास होता है वैसे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है. ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कआउट्स ऑल्सो, उनके ट्रेनिंग सेशन कितने हुए, वर्कआउट कितना हुआ, ये सब हमें डाटा एनेबल होता है, डाटा हमें मिलता है. द डाटा एनेबल्स अ स्पोर्ट्स पर्सन to study the data enables a sports person to study his performance as well as of the others players worldwide. It has tremendously helped in improving individual as well as team performances. Here we can see the data enables a sports person to study his performance as well as the other players' performance worldwide. So not only individual performance but the team performance also has been monitored due to this data. मतलब अगर एक प्लेयर है जैसे धोनी है, तो धोनी टीम का अगर कैप्टन है तो वो खुद का तो परफॉर्मेंस देखता है, वो परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा कैसे होता है उस पर वर्कआउट करता है, और साइमल्टेनियसली ही इज़ वर्किंग ऑन द टीम अचीवमेंट और वर्किंग ऑन द टीम परफॉर्मेंस. सो यहाँ पे क्या होता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट टीम परफॉर्मेंस इज़ मैटर्स अ लॉट. तो ये जो सारे रिकॉर्डिंग है ये भी ये लोग गो थ्रू करते हैं
वो देखते हैं और आगे जाके हमारे टीम में कौन कौन से टीम के लोगों में कौन कौन से एफ़र्ट्स लेने हैं और क्या अच्छा कितना हम अच्छा कर सकते हैं हमारे टीम के लिए, इसके ऊपर भी वो लोग सोच सकते हैं। ये सब हमें डाटा एनालिसिस और जो डाटा मिलता है उससे हम ये सब कर सकते हैं। इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट करना है या टीम इम्प्रूवमेंट करना है, टीम परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सब हम देख सकते हैं ये डाटा की वजह से। द नेक्स्ट इज द सेंसर्स embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarters. The sensors help us to understand the field condition, the weather, individual performance, etc. Video analytics help us to see each and every performance minutely. अभी देखो इसमें क्या लिखा गया है, सेंसर्स एम्बेडेड इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब जब मैच चालू है दैट टाइम जो कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ हुए, फॉर एग्जांपल बॉल, बैट, देन स्टम्प्स, सो वो ठीक तरह से है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, फॉल्ट है क्या, ये सब देखने का काम जो है वो ये सेंसर्स करते हैं। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा है, अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो वो कौन से डिग्री में हो रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है। वन मोर थिंग दे हैव मेंशन हियर, द सेंसर्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड कंडीशन, मीन्स द ground condition we come to know through the sensors, then weather and individual performance. Each and every minute information we can record through these sensors, we can record through this video analysis equipments. Fine. For example, अगर हमें देखना है कि अगर कोई आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, तो उस टाइम जो ग्राउंड पे जो अंपायर रहते हैं उनको पता नहीं चलता कि वो जो प्लेयर है वो आउट हुआ है नहीं, तो वो क्या करता है, वो साइन लैंग्वेज में बताता है कि हमें थर्ड अंपायर का डिसीजन चाहिए। तो उस टाइम थर्ड अंपायर क्या करते हैं, जो कंप्यूटर ने रिकॉर्ड किया गया जो वीडियो है, जो हम बोलते हैं वीडियो एनालिटिक्स, वो जो वीडियो है वो वीडियो देखकर 2-3 बार 3-4 बार वो वीडियो देखकर वो बता सकते, डिसीजन दे सकते कि वो जो प्लेयर है वो आउट हुआ है या नहीं। तो ये क्या है, ये सारे सेंसर की वजह से, वीडियो की वजह से ये सब पॉसिबल होता है, और ये सब क्या है, डाटा एनालिसिस, और डाटा जो है वो हमें ये सब इंफॉर्मेशन देता है। नाउ विल मूव टूवर्ड्स